Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course especially for the students from 9 to 12. And in our today's live lecture we will continue chapter number 6 for class 9th, and the name of the chapter is tissues. And this is our quick reason for the first term examination that is to be held in November 2021. So let us start with our chapter number 6, that is from the biology part, and the name of the chapter is tissues. That is tissues. So tissues, that means first of all we will take cells. Cell is a structural and functional unit of life, and cells made up of tissues, and tissues made organ, and after organ there is the formation of organ system, and after the formation of the organ system there is the formation of individual. That means cell, that is a structural and functional unit of life, and cell forms the tissues forms the organ, and after the organ there is the formation of organ system, and after the formation of the organ system there is the formation of the complete individual. That means how the formation of the individual takes place. So let us start with our first question regarding the chapter, that is the tissues, and our first question is, which of the following tissues has dead cells? Which of the following tissues has dead cells? Options are, number 1 is parenchyma, second one is sclerenchyma, third one is collenchyma, and the last one is the epithelial tissues. That means which of the following tissues, इनमें से कौन से टिश्यूज हैं that has the dead cells? ऑप्शंस दी गई हैं, या तो पेरेन्काइमा सेल्स में डेड सेल्स होते हैं, या फिर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में डेड सेल्स होते हैं, कोलेन्काइमा टिश्यूज में डेड सेल होते हैं, या फिर एपिथेलियल जो आपके टिश्यूज हैं उनमें डेड सेल्स होते हैं. सो you have to choose the right option for the question number 1, that is out of these following tissues which has the dead cells. इनमें कुछ से कोई ना कोई टिश्यूज ऐसे हैं जिनमें की डेड सेल्स पाए जाते हैं. All these tissues are present in the plants. ठीक है, तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जिनमें की डेड सेल्स जो प्रेजेंट हैं. तो बेटे इनमें जो डेड सेल्स जो पाए जाते हैं वो किन टिश्यूज में पाए जाते हैं? दैट इज sclerenchyma. Sclerenchyma are the tissues that has the dead cells. Sclerenchyma. Sclerenchyma tissue has the dead cells. जबकि parenchyma, collenchyma और epithelial tissues में dead cells जो होते हैं वो present नहीं होते हैं. Now shift to the question number 2, and your question number 2 is find out incorrect sentence. Find out incorrect sentence. Options are, parenchymatous tissues have intercellular spaces. B, collenchymatous tissue are irregularly thickened at corners. C, apical and intercalary meristems are permanent tissues. And the last one is, meristematic tissue in its early stage lack vacuoles. So you have to find out the incorrect statement out of these following 4 options. So which is the incorrect sentence? So it is your question number 2. तो बेटे इनमें से जो incorrect sentence है वो आपको find out करना है. पहला जो आपका sentence है that is parenchymatous tissues have intercellular spaces. That is right sentence, क्योंकि जो parenchymatous tissues होते हैं इनमें intercellular spaces जो होते हैं वो present होते हैं. That means parenchymatous tissues have intercellular
spaces. Second one is colon-camitous tissues are irregularly thickened at the corners. This is again the correct sentence because colon-camitous tissues always have irregularly corners or irregularly thickened at the corners. So this is again the correct sentence. Next is meristematic tissues in its early stage lack vacuoles. जो meristematic tissues होते हैं, they always lack vacuoles in its early stage. So this is again the correct sentence. So apical and intercalary meristems are permanent tissues. तो इसमें जो कहा गया है कि जो apical and intercalary meristems हैं, apical as well as intercalary meristems, these are permanent tissues, but apical and intercalary meristems, they are not permanent tissues. So this is the incorrect statement. So option C is the right answer for the question number 2. And the incorrect sentence in the question number 2 is apical as well as intercalary meristems, they are permanent tissues. So this is the wrong sentence. Now shift to the question number 3, and the question number 3 is girth of stem increases due to. Girth of stem increases due to. Options are number 1 is apical meristem, B lateral meristem, C intercalary meristem, and the last one is vertical meristem. So you have to find out girth of stem increases due to. So what is the main reason where girth of stem increases due to? Either increases with the apical meristem, increases with lateral meristem, increases with intercalary meristem, either increases with the vertical meristem. So it is your question number 3. So girth of stem, it always increases due to, that is increases due to lateral meristem, not with the apical meristem. तो ये जो है वो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो गर्थ होता है स्टेम का, it always increases with the help of the lateral meristem, not with the apical meristem के साथ जो girth of stem है, it does not increases. Intercalary meristem के साथ में जो girth of stem है, that is not increases, and even the vertical meristem, it does not increases the girth of the stem. But the only reason where the girth of the stem increases, that is due to the lateral meristem. That is due to the lateral meristem. So this is the correct statement for the question number 3. That is the girth of the stem increases due to the lateral meristem. Now shift to the question number 4, and your question number 4 is which cells does not have perforated cell wall? Which cells does not have perforated cell wall? Options are tracheids, second one is companion cells, third seed tubes, and the fourth one is vessels. So it is your question number 4, and the question number 4 is which cells does not have perforated cell wall? Options दी गई हैं आपके पास, tracheids है, companion cells है, seed tubes हैं, and the last one is vessels. तो इसमें से बच्चे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनमें की परफोरेटेड सेल वॉल्स नहीं होते हैं. या तो ट्रैकीड्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कंपेनियन सेल्स में नहीं होते हैं, सीड ट्यूब्स में से नहीं होते हैं, या फिर आपके वेसल्स में नहीं होते हैं. तो इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कोई ना कोई सेल्स ऐसे हैं जिनमें की परफोरेटेड सेल वॉल्स नहीं पाए जाते हैं. तो इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें ये परफोरेटेड सेल वॉल्स नहीं होते हैं? तो बेटे ट्रैकीड्स होते हैं, इनमें जो होते हैं वो परफोरेटेड सेल वॉल्स ऑलवेज होते हैं, वो अकर करते हैं. सीड ट्यूब्स में भी होते हैं, वेसल्स में भी होते हैं जो परफोरेटेड सेल वॉल्स होते हैं. पर जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स does not have
companion cells does not have perforated cell wall. सो है बेटे, इनमें से जो आपके कंपेनियन सेल्स होते हैं दे डू नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल्स, वेयर एज आपके ट्रैकिड्स है, सीव ट्यूब्स है, वेसल्स है, इनमें जो है वो परफोरेटेड सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ओनली कंपेनियन सेल्स आर द सेल्स दैट डज नॉट हैव एनी परफोरेटेड सेल वॉल. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. Next is your question number 5, and your question number 5 is intestine absorbs the digested food materials. That means your intestine, as all we know that it always absorbs the digested food material, and the intestine is further of two types, that is small intestine and the large intestine. So your digested food is always absorbed in the intestine. What type of epithelial cells are responsible for that? If your food is absorbed, your digested food material is absorbed in the intestine, then what type of the epithelial cells are responsible for that? That means some type of the epithelial cells are responsible for that type of the absorbed food material in the intestine. Options are stratified squamous epithelium, second one is columnar epithelium, third one is spindle fibers, and the last one is cuboidal epithelium. That means if the intestine is responsible for the absorption of the digested food material, that means some type of the epithelial cells are responsible for that. Options are, that is stratified squamous epithelium, second one is columnar epithelium, third one is spindle fibers, and fourth one is the cuboidal epithelium. And it is the question number 5. तो बेटे इनमें से जो आपके some epithelial cells हैं that are responsible for the absorption of the digested food material in the intestine, तो वो जो आपके stratified squamous epithelium हैं they are not responsible for the absorption of the digested food material in the intestine, क्योंकि वो responsible नहीं होते हैं. Spindle fiber जो है they are again not responsible for the absorption of the digested food material in the intestine, and even the cuboidal epithelium is not responsible, but only columnar epithelium that is your columnar epithelium. These are the epithelial cells that are responsible for the absorption of the digested food material in the intestine. Next is your question number 5, not 5 but your question number 6, and your question number 6 is a person met with an accident in which two long bones of the hand were dislocated. If a person is met accidentally in which his two long bones of the hands were dislocated, then which among the following may be possible reason? अगर कोई एक पर्सन है और उसके एक्सीडेंट में जो है टू लॉन्ग बोन्स जो है वो अगर डिसलोकेटेड हो जाती है, दैट मीन्स एट दैट टाइम which following may be possible reason? Options are tendon break, second one is break of skeletal muscles, C ligament break, and the fourth one is areolar tissue break. And it is your question number 6. तो बेटे अगर कोई पर्सन जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो एक एक्सीडेंट को फेस करता है और उस एक्सीडेंट में उसके अगर दो लॉन्ग बोन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसलोकेटेड हो जाते हैं, देन विच अमंग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन? तो उसमें से उस दो लॉन्ग बोन्स के डिसलोकेट होने के लिए पॉसिबल रीजन जो होगा वो क्या होगा? या तो टेंडन जो होगा दैट इज टू बी ब्रेक, या फिर दो स्केलेटल मसल्स जो होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे, या फिर लिगामेंट ब्रेक करेगा,
या फिर एरियोलर टिश्यू विल ब्रेक. दैट मीन्स some reasons are possible for the break of the two long bones of the person in an accident, and it is your question number 6. तो बेटे अगर कोई पर्सन जो है वो मेट करता है एक्सीडेंट को और उसमें उसके दो लॉन्ग बोन्स जो है वो डिसलोकेट कर जाते हैं, एट दैट टाइम जो पॉसिबल रीजन रहेगा तो उसमें जो टेंडन ब्रेक होगा दैट इज नॉट द पॉसिबल रीजन, क्योंकि टेंडन ब्रेक इज नॉट अ पॉसिबल रीजन फॉर द two long bones of the hands were dislocated. इवन ब्रेक ऑफ द स्केलेटल मसल्स जो होंगे वो भी एक पॉसिबल रीजन नहीं रहेगा जिसमें कि जो बोन्स हैं हैंड्स के वो डिसलोकेट कर जाए. इवन टू कि एरियोलर टिश्यू जो होगा अगर वो ब्रेक कर जाता है तो वो भी एक पॉसिबल रीजन नहीं है हैंड्स के बोन्स को डिसलोकेट करने के लिए. बट अगर लिगामेंट ब्रेक कर जाता है, इफ द लिगामेंट ब्रेक if the ligament break, that means that is the possible reason why an person is met with an accident in which two long bones of the hands were dislocated. So this is the scientific or possible reason for this question, that is ligament break, and it is your question number 6. Next is your question number 7, and your question number 7 is while doing work and running. While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. जब आप कोई काम करते हैं या फिर आप दौड़ते हैं, at that time you move your organs. Automatically जो आपकी बॉडी के organs होंगे वो उस टाइम पर क्या करते हैं, मूव करते हैं. लाइक आपके हैंड्स मूव करेंगे, आपकी जो लेग्स होंगी वो भी मूव करेंगी. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा. व्हाइल डूइंग वर्क एज वेल एज रनिंग देन यू मूव योर हैंड्स एज वेल एज लेग्स. सो फर्स्ट रीजन इज स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स. या तो आपके स्मूथ मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर पुल करेंगे. पुल किसको करेंगे, पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स. सेकेंड इज स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स टू मूव द बोन्स. या तो पहला रीजन है कि स्मूथ मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या वो पुल करेंगे लिगामेंट को, किस चीज के लिए, टू मूव द बोन्स. सेकेंड वन है स्मूथ मसल्स जो होंगे वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर वो पुल करेंगे किस चीज को, टेंडन को, टू मूव द बोन्स. थर्ड इज स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड वन इज स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स. एंड द लास्ट वन इज स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द tendon to move the bones. That means there are 4 specific reasons while doing work as well as running. That means at that time your body organs moves like hands and legs, etc. So which of the following is correct? First one is smooth muscles is contract and pull the ligament to move the bones. Second one is smooth muscles contract and pull the tendon to move the bones. Third one is skeletal muscles contract and pull the ligament to move the bones. And the fourth one is skeletal muscles contract and pull the tendon to move the bones. So which is the specific reason for the movement of your body organs such as hands and legs while doing work as well as running? So it is your question number 7. While doing work and running, तो बेटे जब हम या तो वर्क करते हैं या रन करते हैं, एट दैट टाइम हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होंगे वो मूव करते हैं सच एज हैंड्स एंड लेग्स. तो उसमें जो स्पेसिफिक रीजन आपका रहेगा उसमें ये रहेगा कि जो स्केलेटल मसल्स होंगे आपके वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स. क्योंकि ये जो स्केलेटल मसल्स होंगे वो उस टाइम क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. और जब आपके स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे
तो साथ में वो क्या करेंगे, वो टेंडन को पुल करेंगे. एट दैट टाइम इट पुल द टेंडन, और ये टेंडन जो होगा इट हेल्प्स टू मूव द बोन्स. इस टेंडन की हेल्प से क्या करेंगे, मूव द बोन्स, मूव द bones. So this is the specific statement while doing the work and running. That means the body organs move like hands and legs, etc. So the correct statement is skeletal muscles contract and move, pull the tendon to move the bones. Next is your question number 8, and your question number 8 is which muscles act involuntarily? Which muscles act involuntarily? Options are straightened muscles, second one is smooth muscles, third is cardiac muscles, fourth is skeletal muscles. That means there are 4 muscles, and out of these 4 muscles, which muscles act as involuntary? Option A is first and second, B second and third, C third and fourth, and D is first and fourth. That means you have to find out of these muscles which muscles act as voluntary. That means there are 2 types of actions regarding the muscles, that are voluntary actions as well as involuntary actions. So which muscles act involuntarily? इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से muscles हैं जो involuntarily act करते हैं. तो इनमें से जो इनवॉलेंट्रली हैं, जो मसल्स आपके इनवॉलेंट्रली एक्ट करते हैं, वो आपके कौन से मसल्स हैं? वो हैं आपके स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स जो हैं वो आपके क्या करते हैं, इनवॉलेंट्रली एक्ट करते हैं, एज वेल एज कार्डियक muscles. That means out of these muscles, the muscles which act involuntarily, that are smooth muscles, these are involuntary muscles, as well as cardiac muscles, these are involuntary muscles. So here this is the right answer for the question number 8, that is smooth muscles as well as cardiac muscles, they act as involuntary muscles. So this is the right answer. Next is your question number 9, and your question number 9 is meristematic tissues in plants are. That means these meristematic tissues are present in the plants, and your option A is localized and permanent. Second one is not limited and low certain regions, localized and dividing cells, and D is growing in volume. That means meristematic tissues in plants are. So there are 4 options for the question number 9, and you have to choose the right answer for this question. So meristematic tissues in plants. So बेटे जो meristematic tissues हैं आपके plants के, वो specially क्या करते हैं? These are specially localized and dividing cells. ये localized करते हैं as well as these are the dividing cells. These are always localized and dividing cells. So the meristematic tissues that are present in the plants, these are always localized as well as they are dividing cells. So this is the right answer for the question number 9. Next is the question number 10, and your question number 10 is which is not a function of epidermis. आपके पास 4 फंक्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है. सो आउट ऑफ दीज which is not the function of epidermis? Option A is protection from adverse condition, second one is gaseous exchange, C conduction of water, and D is transpiration. So which is not a function of specially epidermis? Either protection from the adverse condition, gaseous exchange, conduction of water, as well as transpiration. So it is your question number 10. जो epidermis है बेटे, epidermis always protects from the adverse condition.
तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो कि एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है। बट एपिडर्मिस जो है इट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन। गैशियस एक्सचेंज में भी एपिडर्मिस जो है वो हेल्प करता है। इवन टू की ट्रांसपायरेशन में भी एपिडर्मिस जो है वो हेल्प करता है। सो अगर इनमें से जो फंक्शन नहीं है एपिडर्मिस का, दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट द फंक्शन ऑफ epidermis. So out of these in which there is not the function of epidermis, that is the conduction of water is not the function of epidermis, whereas protection from the adverse condition, gaseous exchange as well as transpiration, all these are the functions of the epidermis. Next is your question number 11, and your question number 11 is select the incorrect sentence. That means you have to select the incorrect sentence. Option A is blood has a matrix. Blood has a matrix containing proteins, salts and hormones. Blood has a matrix and it always contains the proteins, salts and hormones. Second is two bones are connected by ligament. Third one is tendons are non-fibrous tissue and fragile. D, cartilage is a form of connective tissue, and it is your question number 11. So you have to choose the incorrect sentence out of these sentences. Which is the incorrect sentence? Blood has matrix containing proteins, salts and hormones. It is always the correct sentence because blood, it always has matrix and that contains the proteins, salts as well as hormones. Two bones are connected by ligament. It is again the correct sentence because two bones are always connected by the ligament. Cartilage is a form of connective tissue. It is again the correct sentence because cartilage, it is a form of specially connective tissue. So the incorrect sentence is regarding the question number 11 is tendons are non-fibrous. Tendons are non-fibrous tissue and fragile. So this is the incorrect sentence. That is, tendons are non-fibrous tissue and fragile. So this is the incorrect sentence. So it is your question number 11. Next is your question number 12, and your question number 12 is cartilage is not found in. Cartilage is not found in. Options are nose, B ear, C kidney and the last one is larynx. That means cartilage is not found in. इनमें से cartilage किस में नहीं पाया जाता है? Options दिए गए हैं आपके पास nose, ear, kidney and the last one is larynx. And it is your question number 12. कार्टिलेज जो है बेटा वो आपके नोज में भी प्रेजेंट होता है, आपके ईयर में भी प्रेजेंट है कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द नोज, ईयर एज वेल एज आपके लेरिंक्स में भी प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज होगा. बट द कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन द किडनी. कार्टिलेज is not found in kidney. So cartilage is not found in the kidney. So this is the
right answer. Next is your question number 13, and your question number 13 is fats are stored in human body as. फैट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में ऑलवेज स्टोर्ड होते हैं, पर वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं? ऑप्शंस है क्यूबाइडल एपिथेलियम की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, बोन्स की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, या फिर कार्टिलेज की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं. सो फैट्स दीज आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज आइदर क्यूबाइडल एपिथेलियम, आइदर एडिपोज टिश्यू, either bones, and the last one is cartilage. Question number 13. Fats are stored in the human body. तो फैट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में जो वो स्टोर्ड होते हैं वो क्यूबाइडल एपिथेलियम में स्टोर्ड नहीं होते हैं. These are stored as a cuboidal epithelium. Question number 13. These are again not stored as a bones की फॉर्म में भी वो स्टोर नहीं होते हैं. Fats are not stored in the human body as a cartilage की फॉर्म में भी वो स्टोर नहीं होते हैं. But fats are stored in the human body as adipose tissue. पर वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? वो adipose tissue की फॉर्म में. Fats are stored in human body as adipose tissue. As adipose tissue. So it is the question number 13. So fats, these are stored in the human body, but these are stored as a adipose tissue, not cuboidal epithelium, not bones, and not cartilage. But fats, these are stored in the human body as in the form of adipose tissue. So this is the right answer. Next is the question number 14, and the question number 14 is bone matrix is rich in. Bone matrix is rich in. Option A is fluoride and calcium. Second one is calcium and phosphorus. Third one is calcium and potassium, and the last one is phosphorus and potassium. So bone matrix is rich in either fluoride and calcium, calcium and phosphorus, calcium and potassium, and the last one is phosphorus and potassium. किस फॉर्म में बोन मैट्रिक्स जो होता है वो रिच होता है? कैल्शियम या फिर आपका फॉस्फोरस की फॉर्म में रिच होता है बोन मैट्रिक्स जो है, या फिर फ्लोराइड या कैल्शियम की फॉर्म में रिच होता है, या फिर कैल्शियम एंड पोटाशियम की फॉर्म में है, या फिर फॉस्फोरस एंड पोटाशियम की फॉर्म में रिच है. तो जो बोन मैट्रिक्स होता है वो फ्लोराइड या कैल्शियम की फॉर्म में वो रिच नहीं होता है. दिस इज नॉट रिच इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड एंड कैल्शियम, एंड दिस इज नॉट अगेन रिच इन द कैल्शियम एंड द पोटाशियम, एंड फॉस्फोरस एंड पोटाशियम की फॉर्म में भी आपका बोन मैट्रिक्स जो है वो रिच नहीं होता है. बट बोन मैट्रिक्स दैट इज रिच इन द कैल्शियम एंड phosphorus. Calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus की फॉर्म में जो है वो बोन मैट्रिक्स रिच होता है. That means bone matrix is always rich in calcium and phosphorus. So this is the right answer. And this is our last question for our today's live video lecture. That is your question number 15, because our today's target for our today's live video lecture is of 15 important MCQ questions or 15 important objective questions regarding the chapter that is tissues. And your question number 15 is contractile proteins are found in. Options are bones, B blood, C muscles, and D is cartilage. Contractile proteins are found in.
ऑप्शंस बोन्स, ब्लड, मसल्स एंड कार्टिलेज। तो बेटे जो कार्टिलेजनस या कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉट कार्टिलेजनस बट जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो या तो बोन्स में पाए जाते हैं, या फिर ब्लड में पाए जाते हैं, या मसल्स में पाए जाते हैं, या फिर कार्टिलेज में पाए जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं बेटे वो बोन्स में नहीं पाए जाते हैं, वो ब्लड में भी नहीं पाए जाते। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होंगे वो बोन्स में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, इवन दे आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड। कार्टिलेज में भी वो प्रेजेंट नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। दीज आर ऑलवेज एब्सेंट इन द बोन्स, blood as well as cartilage. But cartilage, or not cartilage but contractile proteins, they are always found in the muscles. They are always found in the muscles. So here contractile proteins are found in the muscles. So this is the right answer. So here beta we complete important 15 MCQ questions or objective questions from this chapter, that is tissues. So once again good night to all the students.